Hello friends, today we are going to take the exercise of how far is the river. In the exercise, question A, answer these questions. First, what stood between the boy and the river? Answer, mountain stood between the boy and river. Second question, how old was the boy? जो लड़का था उसकी एज कितनी थी? एंड द आंसर इज द बॉय वाज 12 years old. वो जो लड़का था वो 12 साल का था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज ही बेयरफुटेड? वो ऐसे पैरों में कुछ पहने बिना क्यों था? Because he felt free in his bare feet. क्योंकि वो फ्री महसूस करता था खुद को. फोर्थ क्वेश्चन, what was the meal his parents had left for him? उनके जो पेरेंट्स थे उसको खाने के लिए क्या क्या रखे गए थे? A loaf of bread, some milk and 2 eggs. Next question, according to the girl, how far was the river? उस लड़की के अनुसार नदी कितनी दूर है? According to the girl, the river was 20 miles away. 20 miles away. Sixth, what did the village boy say? वो जो village boy था उसने क्या किया? क्या बोला? आंसर, द रिवर वॉज नॉट फार. अभी रिवर ज़्यादा दूर नहीं है ऐसे बोला. जस्ट राउंड द नेक्स्ट हिल, ये नेक्स्ट जो हिल है उसका एक राउंड ले एंड स्ट्रेट डाउन और नीचे जा, ऐसे उसने बोला था. लास्ट क्वेश्चन, द रिवर वॉज फार बट द बॉय रीच्ड इट. What does this tells you about the boy? It tells us that he was a very determined boy. Okay? Now the next question. Take the correct meaning of these phrases and sentences. Thickly forested mountain means the mountain had a thick forest on it. Correct. First is correct. A. Okay. A is correct. Okay. Second, not because he could not afford shoes. He could afford to buy shoes. He did not have the money to buy shoes. He liked shoes but had none. Correct answer is A. Third, here was the opportunity he had waited for. The opportunity had not been waiting for him. He had been waiting for just such a chance. Correct? B is correct. B is correct. Which was fairly accurate. His statement was right. Correct. His statement was right. If someone had been with him, he would not have flattered. Correct. If he had someone with him, he would not have stopped or hesitated. Correct. A. Okay. फर्स्ट का A, सेकेंड का A, थर्ड का B, फोर का A एंड फिफ्थ का A. ओके. क्वेश्चन C,
What does the story tells us about boy? स्टोरी में बॉय के बारे में, उस लड़के के बारे में क्या लिखा है? अगर कोई गलत चीज़ हो तो क्रॉस आउट करो, करेक्ट हो तो टिक करो. ओके. द नेम ऑफ द बॉय दिया है क्या? नहीं, तो क्रॉस आउट करो. हाउ ओल्ड ही वॉज दिया है 12 years, तो इसको करेक्ट करो. द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही लिव्ड नहीं दिया, क्रॉस आउट करो. व्हाई हिज पेरेंट्स वेयर अवे दिया है, करेक्ट करो. द नेम ऑफ देयर रिवर नहीं दी, क्रॉस आउट. द कलर ऑफ हिज हेयर दिया है. वेदर ही वोर शूज, करेक्ट दिया है. ओके. इन दिस वे आवर सी क्वेश्चन ऑल्सो फिनिश्ड. Now turn to B. Turn to D. You can get the opposite of word by adding dis to it. dis. हमको क्या होता है कि कुछ शब्दों में आगे डिस लगाने से उसका अपोजिट वर्ड मिल जाता है. जैसे कि ट्रस्ट, डिस लगाया, डिस्ट्रस्ट हो गया. ओके. तो ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए हैं. ऑर्गेनाइज, पैशनेट, एक्सटेंड, मेक, स्टेयर, ओबे, कनेक्ट. तो इनको किसको किसको डिस लगने से अपोजिट वर्ड तैयार होता है, ये हमको शब्द को सर्कल करना है. ओके. ठीक है. ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज होता है, इसको सर्कल करो. चलो. पैशनेट डिसपैशनेट होता है, चलो सर्कल करो. ओके. एक्सटेंड डिसएक्सटेंड नहीं होता. मेक डिसमेक नहीं होता. स्टेयर डिस्टेयर नहीं होता. ओबे डिसओबे होता है, इसको सर्कल करो. कनेक्ट डिसकनेक्ट. ओके. तो ये दो और ये दो, 4 शब्द, इसको डिस लगाने से अपोजिट वर्ड मिलता है. Okay, this way our D question also finished. Turn to E. Add in, un, dis, im to for the opposite of this word. Opposite word करने के लिए in लगाओ, un लगाओ, dis लगाओ या im लगाओ, कौन सा भी लगा सकते हो जिससे अपोजिट वर्ड तैयार हो. पहला उन्होंने करके दिया है इनविजिबल, और सेकंड का होता है अनसाउंड, UNSOUND, अनसाउंड. ओके. थर्ड का रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, DISRESPECT, डिसरिस्पेक्ट. डिसीजन इनडिसीजन, INDECISION, indecision. Okay. Perfect imperfect, IMPARFECT, imperfect. perfect imperfect. आगे है प्योर impure, IMPURE, impure. ड्यू, 7th वाला, ड्यू अनड्यू, UNDUE. ओके. ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट, DISTRUST, डिस्ट्रस्ट. ओके. लास्ट वाला था. तो नाउ our E question also finished. Now turn to F. Tick the correct preposition in the bracket. Okay. First, the young boy's house stood on the hill opposite a huge mountain. फर्स्ट को आता है ऑन.
Okay. Second, his parents had gone for. Second को आता है for, FOR, for something important, and he knew they wouldn't be home till the evening. Third, he packed his lunch and set out for the river. Correct. थर्ड का आएगा for. ओके, ये. Fourth, the boy passed a woodcutter who told him it was a long way to the river. 2. 4 को आएगा 2. And fifth को, finally he heard a sudden roaring sound and the river was there before him. BEFORE. In this way, our F question is finished. Okay. Now turn to G. Fill in the blanks with correct preposition from the box. You can use preposition more than once. एक preposition आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो. Thanks for the lunch. यहाँ आएगा for the lunch. We are off, off to the station now. Okay, ये हो गया first sentence. Second, Ramu had a glass of milk and 2 slices of bread for breakfast. Second को आएगा for. Okay, and third sentence, please buy me another book by Ruskin Bond. Third को आएगा buy. Okay, now fourth, I may go to Mumbai this summer. फोर्थ को आएगा 2. फिफ्थ, I have many of his books. 5. इसको आएगा off. सिक्स्थ, a cricket match will be played on Monday. सिक्स्थ को आएगा on. And seventh, I have kept the flowers on the table. On. Okay. In this way, our all exercise is finished. Thank you.